तो सर लाइक जितना मुझे अभी पता लगा इस चीज के बारे में कि this is a sort of city forestry goes Yeah, on, yeah. They're not doing jungle forestry. Yes. So what are the main focus जब plantation चलता रहता है? इसमें फोकस ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कैसे अट्रैक्ट करें. So we try to incorporate variety of indigenous species, plant species, so that they can attract a lot of birds, insects, and lower faunas like wildlife like herbivorous spotted deer, then your jackals and hares and all those species. So that is the main focus. And secondly, how we can attract the local citizens. And they should also appreciate the nature, the importance of nature, because nowadays we are facing this pollution problem everywhere. The cities are, here we have steel plants and cement factories and all those industries. So there is a lot of pollution. People are facing a lot of diseases and all. So to come out of this, we should have some touch with the nature, because ultimately we should go back to nature. That's the concept. So with this idea behind, we try to create this forest of around 300 acres. Mostly in a layman style में अगर we understand, people think forest department मतलब जंगल में काम करता होगा, है ना? But this is also forest department working in city, and I think it's in every city. Yes. So, but do you feel that you all are actually creating the lungs of the city? Yeah, indeed, because ये cities के जो एरिया के जो लोग हैं, उनके लिए मतलब बहुत बड़ा एक वरदान है. क्योंकि ऐसी जगह शहर के बीच में आजकल मिलना एक बहुत बड़ा मुश्किल है. और वैसे ही इसको फिर प्रोटेक्ट करते हुए, बिकॉज यू सी दिस लैंड वाज टोटली बैरन, और अगर इसमें प्लांटेशन नहीं किया रहता तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया रहता. दैट वाज द केस. So somehow we got this land, and then we tried to make this into a green lung of the city. What are the challenges of this thing? Challenges are हमने यहाँ पे generally first this area was not protected. So people usually they used to come for gambling and all those kind of works. Yeah. And people and even many cattle, they used to roam around in this area. Because people will leave their stray cattle and all. So that was the problem. Then there was no water at all in this area. For planting and for watering the trees and all. So those and we were having a fund crunch also. Initially. So those were the challenges. Then slowly we overcome those problems. Yeah. So now, like, I would say you are a little bit happy. Yeah. Now things are growing. You are able to see the growth of plantation. Now they have come up like a forest. So things are moving in a positive direction, I would say. So we have been working in the jungles, in the villages, now working in the cities. Yeah. Which would you say is like tough job for a forest department? Because working in area where you don't have forest, it's a challenging, tough job here, because we have to create something which is similar to forest area or similar to forest. We have to create some forest plantations. We have to bring the forest cover. We have to increase the forest cover in city area. So that's the challenge over here. And then same time we have to promote the plantation of trees. We have to promote the agroforestry also. So there are a lot of challenges. Business point of view also you need to keep in mind. Yeah, that's why. Because how this people revenue how we can generate the revenues for farmers, how we can increase their income using some trees or agroforestry. That is also a challenge for us. Yeah. These are all new trees. Yeah, these are all new trees planted this year. We go in that area, then we'll be able to see how the growth has happened.
एक हमने यहाँ पे एक एम्पी थिएटर बनाया है या ओपन थिएटर बनाया है बायोडायवर्सिटी पार्क में। ये मुख्य रूप से अगर हमको कुछ संगोष्ठी करना है या कुछ नुक्कड़ नाटक करना है या कोई भी डिस्कशन करना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म शो वगैरह, उसके लिए ये बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे आके बैठे और एक बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड कोई ऐसे अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फंक्शंस जो यहाँ पे कर सकते हैं। So sir, the first thing जिससे मैंने ये चीज़ शुरू करना चाहता हूँ, like you have closely worked on these bales, those Naxalites bales. Yeah. How was your experience? From a layman point of view, हम डरते हैं, like मैं भी इधर आने के पहले वो ना बस्तर जाने में थोड़ा डर रहे थे. Yeah. How is it? How is the reality you think? जनरली जो परसेप्शन है कि छत्तीसगढ़ और बस्तर में अगर जैसे नाम सुनते हैं तो नक्सलिज़म का लोगों को याद आता है या जैसे बाहर के स्टेट वाले हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं है। मतलब बिकॉज आई वर्कड इन केशकाल विच इज़ इन बस्तर रीजन, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एज सच ऐसी चीज़ नहीं है। और कुछ ही जो एरिया है जो एकदम सेंसिटिव एरिया है वो गिने चुने एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नक्सल की एक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम जो छत्तीसगढ़ है वो इट इज़ मतलब यू कैन गो एनीवेयर एंड मतलब यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स ओवर देयर, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और उसी अगर बात किया जाए तो मैं केशकाल में जब पोस्टेड था तो बहुत सारे ऐसे इको टूरिज़्म डेवलप करने की जगह है वहाँ पे, तो हमने उस दिशा में वहाँ पे काम भी किया है, बहुत अच्छे जगह है वहाँ। सर जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, यू सेड कि यूथ को हम उसमें इन्वॉल्व करवा रहे थे क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो दे विल गेट इनटू नक्सलिज्म, ठीक है। सो व्हाट यू फील द प्रॉब्लम इज द अनएम्प्लॉयमेंट? आई फील कि प्रॉपर यूथ को दिशा देने की आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ पे कमी नहीं है, मतलब यहाँ रोज़गार हम लोग बहुत जनरेट कर सकते हैं। मतलब इको टूरिज़्म ही ऐसा चीज़ है या फॉरेस्ट बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप है। सर थोड़ा ब्रीफ करोगे इस चीज़ को? जैसे अपने अगर बस्तर क्षेत्र की बात किया जाए तो बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे लघु वनोपज आधारित प्रोडक्ट्स हैं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम लोग बोलेंगे। और वैसे ही वहाँ पे ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी है इतनी सुंदर है कि उसको हम लोग वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको अगर हम लोग प्रॉपर वे में अगर इको टूरिज़्म डेवलप करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल सकता है, और उस दिशा में हम लोग प्रयासरत भी हैं। और जैसे राजस्थान है या दूसरे स्टेट है जो या केरला है, केवल इको टूरिज़्म पे उनका या टूरिज़्म पे उनका बहुत सारा इकोनॉमी डिपेंड है, तो वो चीज़ हम लोग अपने बस्तर में भी उस चीज़ को हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो और उसके साथ में क्योंकि यूथ जब अगर ये चीज़ों से जुड़ेगा, और हमने जैसे केशकाल में प्रयास किया था कि जितने भी वहाँ के जो लोकल यूथ्स है उनको जोड़ते हुए हमने इको टूरिज़्म साइट्स कुछ डेवलप किए थे, बहुत सारे वाटरफॉल्स थे वहाँ पे। तो वैसे लोगों ने जो है यूथ को अगर हमने जोड़ा है तो उसमें बहुत सारा उनको इकोनॉमिक फ़ायदा भी हुआ है। मतलब एक वाटरफॉल का उन्होंने जो है लगभग एक सीज़न में उन्होंने 8 से 10 लाख रुपया एक सीज़न में जो है उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि ये चीज़ों को हम लोग लेते हुए एक अच्छा एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पूरे दिन से जितने मैंने आपको फॉलो किया, चीज़ें देखा, you try to be very simple, starting from your specs, your dress, like very simple. And Yeah. you don't into that fashion days nowadays. Is it something you got from your childhood? Yeah, मतलब you can say because I like simplicity. अच्छा. So मतलब I think globally what is happening on global level or what we can do, but I try to live very simple life. जितना मेरा मतलब अगर अटायर से लेके मेरे हॉबीज़ इंटरेस्ट जो है, मतलब आई लाइक वेरी वेरी सिंपल थिंग, मतलब फ्रॉम फूड एंड माई ड्रेसेस एंड ऑल।
So I like simplicity. A lot of times offices, sometimes there's a lot of work, they get a bit messed up, things are like this. Do you think there's some dark side of bureaucracy? मतलब it is मतलब to my experience the life is very enjoyable if you enjoy your profession, or if you are passionate about your profession, and there मतलब then you can work very enthusiastically, and you will not get bored also, and you can contribute something for the society, contribute something for the system also, the government system. So I am very positive about the the system. So never feel like things are messing up, I have been targeted. Never faced It happens मतलब, because we are in a system, so there will be some people who will be मतलब, against you, or if you are not fulfilling their vested interest, so they may be going against you. But if you are correct at your position, then I think nothing will happen. And we have to be upright. मतलब, whatever we say, I think it should be मतलब, your conscience should allow to get that things happen. Sir, like from my experience, been for 2 years right now, I felt like every department is good. I'm not saying is that, but I felt forest department is a department which has a lot of resources, so many things to explore. But somewhere when I talk with the aspirants, they're mostly into that IAS, IPS things, है ना? So being in that department, what will you suggest to the aspirants? How is this department beautiful from others? If you say about the Indian Forest Service or the Forest Department as such, we work to serve the nature, to protect the nature, as well as we are working for the livelihood of the tribal communities or the villagers who are in the fringes of forest areas. So overall, we are serving the humanity in totality. So this service is very much, you can say, it's very much important for our nation building. To my experience, because I have done my masters in forestry, so I am very much passionate about this forest science and the forest protection, wildlife conservation. So because everything now we are able to see the things are happening like climate change, and then these pandemics are happening. So now it is a high time that we have to connect with the nature. We have to do something for the wildlife. We have to do something for the nature. So I think this is the only service which enables us to work for the nature. That way, I think this service is very beautiful and very much prestigious to work for the protection of the wildlife and nature and the ecology as a whole. I want to know about your childhood. How was it? In a metropolitan city or village? Actually, I belong to village area, very typical village. Typical village. मतलब you can say it's a hinterland, and मतलब I was my father belongs to you can say he was a farmer. He was you can say marginal farmer, and we. You're the only son? I am the only son. I have got 5 sisters. They are all elder to me. So I studied in this local our government schools till my 10th 12th standards, and so I have gone through all these phases of life, very struggleful life. It was very much that time resources were very much meager, so we survived on that resources, and we struggled a lot because I studied in hostels. I lived in hostels, and then my school was very far away, say 10 kilometers. So I used to cycle every day 10-20 kilometers to and fro from my village. So, and then I was very much, I can say I was very average student. I was not like that talented one, but gradually then I got admission. I got to know about the college. Then I was interested in this forest science, so I got admission in Kola Agriculture University in Maharashtra. So then things got changed. My perspective also got changed, ki what we can do or how we can enter the forest service. So things started changing from that
onwards. And after that, then I went to master's program in forest science. So I studied in Coimbatore in Tamil Nadu. अच्छा. So that time also I was मतलब I would say कि I was not having enough money to get my admission over there. Okay. So my senior supported me. मतलब only I needed some 20,000 rupees to get admission in that university. So that much amount was also not available with us. So our seniors, they supported me. Then I got the GRF, that is Junior Research Fellowship over there. So through fellowship I studied in that university, and then I studied for the UPSC preparation. I did some preparation, and then in second attempt I got selected for UPSC. So this is my journey. Then I was allotted this Chhattisgarh Cadre. So I am working here. सर एक क्वेश्चन सडनली मेरे मन में आया कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ना थोड़ा बेशरम बनना ज़रूरी है. मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ. जैसे वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट यार, लॉट ऑफ पीपल माइट बी सीइंग समटाइम्स आई शॉट एन एपिसोड विद द DIG सर इन अ कैफे. तो पहले थोड़ा शर्म आता था, लोग क्या देख रहे हैं ना. डू यू फील दैट कि वो बेशर्मी आगे लेके जाता है कभी कभार इन अ प्रॉपर वे, नॉट इन अ बैड वे? या डेफिनेटली मतलब you in my college days मतलब I was very naughty. अच्छा. Yeah. Tell me something. How yeah. you हाँ मतलब even in our college days what we used to do कि whenever I wanted to come to my home from Akola and all, so मतलब we used to come by train. So we never booked a reservation, or we used to come without ticket. So that was the case, and our seniors, that was a thrill. Yeah, that was a thrill, and that experience we got. So our seniors actually, they taught us how to go without ticket. that is the legacy we were maintaining there. Okay, legacy. Yeah. So this is how मतलब I gone through that experience. We were caught. मैं पकड़े भी गए, but we knew the tactics also, how to come out of that. Yeah. So that way मतलब we were into these things also. मतलब we learned from that, and then slowly we were also having some bad habits, bad company. So we learn, and gradually we realized कि भाई what is good for us and what is bad for us, and what things will take us to our to achieve our goals and all. So धीरे धीरे हमने जो गलत चीज़ें हैं उसको छोड़ा, फिर और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमने साथ में रखा. So just a few days back ना, I was shooting the episode with भोजराम सर. Okay. तो सर ने एक बहुत चीज़ बोला कि मैं अभी सर भी आपके जैसे एक मतलब फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है. तो सर वाज टेलिंग कि ये जो चेयर है ना, जिस दिन ये चेयर मेरे ऊपर चला जाएगा, उस दिन ये भोजराम खत्म हो जाएगा. है ना? डू यू फील दैट? क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं, लाइक I met so many people, it's very easy to differentiate कौन कैसा है. आप किसी के साथ दो दिन रहे तो समझ आ जाता है थोड़ा बहुत. Do you feel that sometimes that bureaucracy or the power resistance things becomes more than the person, and that actually kills the person? Yeah, sometimes it happens. How to control that? Like for all the budding if bureaucrats are serious. I think हम लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग अल्टीमेटली पब्लिक सर्वेंट है. तो बिकॉज वी आर इन द सर्विस टू डू समथिंग फॉर द पब्लिक, एंड तो अगर वो चीज़ हमारे मन में हमेशा रही तो मुझे लगता है कि ये ईगो और पावर जो ज़्यादा, कोई लोग को लगता है कि हमें ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सो वो थिंग आपको कंट्रोल में रखेगी. अच्छा. और अल्टीमेटली क्योंकि हम वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, और एक ना एक दिन जाके जो है हमको पब्लिक को जो है जवाब देना पड़ता है. क्योंकि आजकल मीडिया, सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको दे आस्क यू क्वेश्चंस, है ना. सो यू आर समवेयर, यू आर आंसरेबल. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, एंड वो हम लोग जो भी करें उसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो पब्लिक को अगर होता है तभी वो चीज़ों को हमने जो है वैसे डिसीजन हमने लेने चाहिए. Like when we were preparing for UPSC, your target was to clear the exam. Yeah. If I ask you, what's your target in next 5 years? मेरा टारगेट है कि कुछ मैं अभी जो हमारे जो जैसे यूपीएससी के समय तो हमारा रहता कि
पहले अचीव करें हम लोग कि एक गोल है, एक शॉर्ट टर्म गोल रहता है कि हम लोग हमारा करियर जो है सेट हो जाए या हम लोग कुछ नौकरी हमको मिल जाए। बट वो तो एक मुझे लगता है कि एक फर्स्ट फेज़ है हमारा। मुझे लगता है कि जो रियल हमारा टेस्ट होता है वो जब नौकरी में आने के बाद जब हम लोग अपने सर्विस में आते हैं तो उस समय स्टार्ट होता है। और एट दिस फेज, राइट, एट दिस पेज, या तो एट दिस पेज जो है हमारा ये टारगेट है कि कुछ मैं जैसे यहाँ दुर्ग में अगर मेरा ये जो टारगेट्स है उसमें कहूँगा कि मैं यहाँ पे कैसे जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सेकेंडली कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री जो है मतलब फार्मर्स के फील्ड में जो हम लोग पेड़ लगाते हैं वो उसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सके और यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड एक मॉडल डेवलप हो सके, इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे अट्रैक्ट कर सके जिससे कि लोगों की आमदनी बढ़ सके। तो उस चीज़ों को हमारा टारगेट यहाँ पे है। उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की दिशा में अगर हम लोग कितना काम कर सके तो मुझे लगता है कि वैसे टारगेट्स मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में हम लोग काम करें। साथ साथ में हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सके क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जैसे एमपी में या दूसरे स्टेट्स में जो है लोग वाइल्ड लाइफ देखने बहुत उसके लिए टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जो है उस चीज़ों को अभी और हम लोग डेवलप करने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो वो ये भी एक मतलब मेरा एक जो है ड्रीम है कि इसको हम लोग कर सकते हैं। We will definitely do that, sir. You're already doing it. एक last question है. What happened with that day transfer where all the media house knows Dhammshil sir has done, so many people are running for you, crying for you. How you made it? Like so many people. It's not an easy job. Like politicians are good in it. I feel कि that as I said कि we should keep in mind कि we are public servant. तो whatever we do, I think it should be for the benefit of public. तो मुझे लगता है कि मैंने जो केशकाल के समय में किया वो पब्लिक को कनेक्ट करने का मैंने प्रयास किया है। सो इट इज़ समथिंग लाइक कि फॉरेस्ट और पीपल इन दोनों का कनेक्शन हमने कर लिया था अच्छे तरह से और आई कुड एबल टू कनेक्ट विद द पीपल। तो वो जो है मतलब कई बार जो होता है लोग कि उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो गैप रहता है, कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है या फिर जो है उनके समस्याओं को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है और लोगों को कनेक्ट किया, यूथ को कनेक्ट किया। तो वो एक चीज़ है मुझे लगता है कि उसके वजह से लोग जो है इतना ये किए। Thank you so much, sir, for giving the time and opportunity. Please keep this good work and thank you for inspiring so many youths like us. Thank you so much for having me here.